Are you ready to explore a city where every view feels like a postcard? यहाँ के हिल टॉप्स क्लाउड्स को टच करते हैं और कोस्टल कॉर्नर्स कहानियाँ सुनाते हैं समंदर की। हिडन वाटरफॉल्स जहाँ नेचर का म्यूजिक बजता है। गार्डन जो फुल ऑफ कलर्स है और कभी-कभी नेचर खुद सामने आ जाता है कैंगरूज के साथ। एडलेड सिर्फ एक जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस है। सो लेट्स डाइव इन। Welcome to a new episode on Foodie Parinde. Just this short 15-minute drive from Adelaide City and boom, you're on top of Mount Osman. Let me tell you an interesting fact about Mount Osman. In the 1800s, this used to be a mining area where people searched for silver and copper. But today, it's completely different. With the beautiful 360-degree views of Adelaide skyline, the coastline, and the Mount Lofty ranges. So next time you are in Adelaide, don't just look up at the hills. Drive up and see the city from above. आज के इस एपिसोड में हम डिफरेंट प्लेसेस कवर कर रहे हैं सिटी एडलेड की। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एक सेकंड नंबर के स्पॉट पे जो है पोर्ट एडलेड लाइट हाउस। तो बस यहाँ आगे जाते हुए हमें पहले दिखता है साउथ ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम म्यूज़ियम, जिसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ब्यूटीफुल से ट्रीज़ है जो अभी स्प्रिंग सीज़न है ऑस्ट्रेलिया में, इस वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत ही अलग है। राइट नेक्स्ट टू इट स्टैंड्स अ रेड हेरिटेज बिल्डिंग with a beautiful white statue of Lady Justice. Now this red building is transformed into a vibrant art gallery from where you can book your tours, walks, and also you can hire a bike. So you should visit this place, which is located on Commercial Road and St. Vincent Street. This heritage icon was fabricated in England, shipped all the way to Australia, and first lit in January 1869 to guide ships safely through the Port River. और एक खास बात, आपको पता है इस लाइट हाउस के अंदर है 83 वाइंडिंग स्टेप्स, जिन्हें चढ़ के आप ऊपर टॉप व्यू पे जा सकते हैं टू टेक द ब्रेड टेकिंग व्यूज़ ऑफ पोर्ट रिवर। So whether you are here for history, art or just the views, Port Adelaide has it all. चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं
इन शानदार नज़ारों के साथ, जहाँ पे हमें एडलेड सिटी का एक अलग ही वाइब देखने को मिलता है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं हमारे इस एपिसोड के थर्ड प्लेस की ओर, विच इज़ फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी, waterfall, and many more. Welcome to Waterfall Gully, one of the most beautiful natural escapes right here in Adelaide, South Australia. This place is also a 15-minute drive from the city centre. It is a whole different world, filled with fresh mountain air, native forest, and the sound of rushing water. Do you know Waterfall Gully sits within the Clayland Conservation Park? And it's also the starting point for one of Adelaide's most popular hikes, the Waterfall Gully to Mount Lofty Summit Trail. It's about 3.9 kilometer one way, a bit steep but totally worth it for those panoramic city views at the top. This spot we are going to cover at the end of this video, so stay tuned. Along the way, keep your eyes open on the trail where you can spot kangaroos, koalas and colorful native birds. ये एडलेड का लार्जेस्ट नेचुरल वाटरफॉल है जो नियरली 18 meters डाउन ऑन अ रॉकी क्लिफ है. It's especially breathtaking in winter and spring when the water flows in full force. स्मॉल ट्रेल को कंटिन्यू करते हुए हम आगे एक सेकंड वाटरफॉल जो कि छोटा है बट बहुत ही मेस्मराइजिंग है. नेचर में टाइम स्पेंड करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है.
So, whether you are chasing waterfalls, hiking trails, or just a peaceful escape into nature, Waterfall Gully is Adelaide's little piece of paradise for you. While leaving from Waterfall Gully, what we found on the roadside is this small shop. Isn't it pretty? यहाँ पे कुछ हैंडमेड और होम ग्रोन चीज़ें रखी हुई है जिसे आप बाय कर सकते हो जस्ट बाय ट्रांसफरिंग द मनी ऑनलाइन. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड प्योरिटी. चलो तो अब हमारे सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं और सिटी से जाते हुए हम आ गए हैं हमारे फोर्थ डेस्टिनेशन की ओर जो है माउंट लॉफ्टी बॉटनिकल गार्डन. It's a breathtaking paradise tucked away in the Adelaide Hills, just 25 minutes from the city. So, this Mount Lofty Botanical Garden is spread across nearly 100 hectares on the slopes of Mount Lofty. This garden is a living masterpiece जहाँ पे आपको cool climate, plants, giant trees and sparkling lake मिल जाएगा. And do you know, in every season like spring, autumn, winter, this botanical garden has to offer you different colors. So you must visit this place in every season. Don't forget your camera because every turn is a postcard. Mount Lofty Botanical Garden in itself is best for nature photography, a quiet escape, or just to breathe in that fresh mountain air. This is also the best picnic spot. फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हमने 4 बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस कवर की है और अभी हम आगे मूव हो रहे हैं आज की 5th प्लेस की ओर जो अपने आप में बहुत यूनिक है और यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया की एक ख़ास चीज़ आपको दिखाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल दी एंड. जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो देन शेयर एंड लाइक this video. Welcome to Mount Lofty, the highest point in Adelaide Hills and one of the most breathtaking spots in South Australia. Friends, जो मैंने अभी बोला आप वो रियल में यहाँ पे महसूस भी करोगे. And this is the Mount Lofty Summit Lighthouse Tower. अभी आप जो ये ट्रेल देख रहे हो ये स्टार्ट होती है वाटरफॉल गली से जहाँ की हमने बोला था ये वन साइड 3.9 किलोमीटर्स है
और वो समिट एंड होती है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेल करते हैं तब क्या क्या दिखता है वो भी हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। पर अभी हम एंजॉय करते हैं माउंट लॉफ्टी से दिखने वाला द सीनिक मोस्ट ब्यूटीफुल एडिलेड सिटी व्यू। तो ये आ गए आज के हमारे इस एपिसोड के शो स्टॉपर। टुडे वी आर वेरी लकी टू मीट सम ऑफ माउंट लॉफ्टीज एडोरेबल लोकल्स along the way. So there you have it, 5 of the most stunning places to visit in Adelaide. Mount Osmond, Port Adelaide Lighthouse, Waterfall Gully, Mount Lofty Botanic Garden and Mount Lofty Summit. Each one offers something unique, from breathtaking views and waterfalls to wildlife and heritage charm. If you love exploring nature, discovering local history and capturing moments that feel magical, Adelaide's got it all. Don't forget to like, share and subscribe for more travel adventures from Foodie Parinde. See you in the next one. Till then, take care and bye-bye.